गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम मेथड ऑफ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीजीएमएस, माइनिंग सरदार, ओवरमैन और इवन की मैनेजमेंट ट्रेनिंग जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी पार्ट्स में आ चुके हैं, लेकिन इस एक सिंगल मास्टर वीडियो की मदद से आप जो है तो मेथड ऑफ वर्क से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। Indian electricity rule, where handheld portable apparatus is used, the voltage should not exceed। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जहां हैंडहेल्ड पोर्टेबल एपरेटस यूज होता है वहां वोल्टेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए 250 वोल्ट से, बी 75 वोल्ट से, सी 30 वोल्ट से, डी 125 वोल्ट से। राइट आंसर इज ऑप्शन डी 125 वोल्ट। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, वेयर द टेलीफोन्स और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड, the signal wires shall be supported on insulators and shall not be energized at more than 30 volt. As per Indian electricity rule, the maximum permissible length of flexible cable used with an electric rope saw wheel is 300 meter. Coal cutting machine for long wall operation is 200 meter, and a flexible cable used with any portable or transportable apparatus in mine is 100 meter. Next question is, ground pillar is option A on the side of the stop, option B at the top of the stop, option C at the base, option D just above the ore drawing crosscut. Right answer is option B, crown pillar is at the top of the stop. Next question is, manhole should be provided along the haulage road at every A meters. A is, haulage road में कितने मीटर के अंतराल पर मैनहोल होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 मीटर, ऑप्शन बी 30 मीटर, ऑप्शन सी 50 मीटर, ऑप्शन डी 15 मीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20 मीटर। पर ध्यान में रखिएगा, वेयर एनी पर्सन इज अलाउड टू वर्क और पास वाइल द हॉलेज इज इन मोशन, मैन होल्स फॉर रिफ्यूज शैल बी प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया ऑफ वर्किंग फेस ब्रोकन पर ड्रिल होल इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए ड्रिलिंग फैक्टर, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग फैक्टर, ऑप्शन सी पाउडर फैक्टर, ऑप्शन डी ड्रिलेबिलिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लास्टिंग फैक्टर। Next question is, dimension of hydraulic permeability expressed with L, M and T। हाइड्रोलिक परमेबिलिटी का डायमेंशन लेंथ, मीटर और टाइम के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन ए एल टी टू पावर -2, ऑप्शन बी एल टी इनवर्स, ऑप्शन सी एम एल इनवर्स, ऑप्शन डी एल स्क्वायर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डायमेंशन ऑफ हाइड्रोलिक परमेबिलिटी इज एल टी इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, best suited method of work for 20 meter thick ore body is steeply dipping and having weak wall and strong host rock. Option A cut and fill, option B stop and pillar, option C block caving, option D sub blend open stopping. Right answer is A cut and fill. Next question is, the grade which is available from a property after actual mining is, option A effective grade, option B actual grade, option C run of mine grade, option D computed grade. Right answer is option A, the grade which is available from a property after actual mining is effective grade. Next question is, in a board and pillar is worked in conjugation with hydraulic stowing, extraction line preferred is, option A steep diagonal, option B diagonal, option C straight line, option D step diagonal. Right answer is option D step diagonal. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, line of phase is mostly followed during depleting operation in India is diagonal. Next question is, top slicing is an underhand caving method which is a variation of, option A sublevel caving, option B shrinkage stopping, option C breast caving, option D cut and fill method. Right answer is option A, top slicing is an underhand caving method which is a variation of sublevel caving. Next question is, which of the following method is applicable to both metallic and non-metallic minerals? Option A sublevel, option B board and pillar, option C blasting gallery, option D stop and pillar. Right answer is option A, sublevel is applicable to both metallic and non-metallic minerals. Next question is, the method of mining a coal seam of 8.5 meter is by, option A combination of board and pillar and longwall methods, option B longwall method in lift, option C longwall sublevel caving, option D board and pillar method in lifts. Right answer is option D, the method of mining a coal seam of 8.5 meter is by board and pillar method in lifts. Next question is, the following is not a continuous mining technology for surface mines. Option A soil dumper, option B bucket wheel excavator, option C conveyor bridge, option D bucket and excavator. Right answer is option A, soil dumper combination is not a continuous mining technology for surface mines. Next question is, which of the following component is more dangerous to ozone layers? Option A halogens, option B sulfur, option C chlorofluorocarbons, option D nitrogen.
Right answer is option A. Halons is the component which is more dangerous to ozone layers. Next question is, a delay detonator has delay element introduced between option A, primary charge and base charge, option B, fuse head and primary charge, option C, detonator tube and fuse head, option D, neoprene plug and neoprene sleeve. Right answer is option B. A delay detonator has delay element introduced between fuse head and primary charge. ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट माइनिंग एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। लास्ट ईयर गेट 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए अंडरग्राउंड कोल माइन ए फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ कैन बी सपोर्टेड बाय ए टेम्पररी सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए हाइड्रोलिक प्रॉप, ऑप्शन बी स्क्रू प्रॉप, ऑप्शन सी सफारी सपोर्ट, ऑप्शन डी ट्रायंगुलर जॉक्स. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. In a underground coal mine, freshly exposed roof can be supported by temporary support in the form of safari support. Next question is, which of the following method of mining is only applicable to non-coal mines? ये क्वेश्चन मैंने SAT CILMT एग्जाम 2020 से लिया है, जो कि बोनस मार्क्स के लिए गया था क्योंकि इसके ऑप्शंस रॉन्ग थे. ये क्वेश्चन भी ज्यादातर क्वेश्चन की तरह NCDE से लिया गया था. तो अकॉर्डिंग टू NCDE राइट ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन ए बोर्ड इन पिलर माइनिंग, ऑप्शन बी स्टॉप इन पिलर माइनिंग, ऑप्शन सी सब लेवल स्टॉपिंग, ऑप्शन डी लॉन्ग वॉल माइनिंग. राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्टॉप इन पिलर माइनिंग. Next question is, a seam is worked at depth of 70 meter from the surface and width of gallery is 3.2 meter. The dimension of pillar should not exceed option A 13.3 meter, option B 15 meter, option C 19.5 meter, option D 16.5 meter. According to sub-regulation 4 of CMR 111, dimension of pillar and galleries are as follows. With the reference of this table, minimum distance between adjacent pillar center to center corresponding to working depth 70 meter and gallery width 3.2 meter is equals to 16.5 meter. Therefore, pillar width is equals to 16.5 minus 3.2 is equals to 13.3 meter. So, the right option is A, 13.3 meter. Next question is, the number of main days in year 2014 is 26,500, rest days are 54 and non-working days due to sick are 46. Find the person ordinary employed in mines. Consider the year means 365 days. क्वेश्चन में दिया है main days in year 2014 is 26,500. Rest days is equals to 54. Non-working days due to sick are 46. So the working days in year is equals to 365 minus 54 minus 46 is equals to 265. Therefore, person ordinary employed in mines is equals to 26,500 divided by 265 is equals to 100. So the right answer is option B. Next question is, if the value of ore is rupees 600 per ton, production cost is rupees 400 per ton and stripping cost is rupees 50 per ton, the break-even stripping ratio of mine is. Break-even stripping ratio is equals to होता है recoverable price या value of ore minus operational cost या production cost divided by stripping cost. Value of ore दिया है rupees 600 per ton, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है रुपीज 400 पर टन, स्टेपिंग कॉस्ट दिया है रुपीज 50 पर टन. सो ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो ऑफ माइन इज इक्वल्स टू 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू 4/1. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए कोल माइन द डेप्थ ऑफ वर्किंग इज 200 मीटर फ्रॉम द सरफेस, width of gallery is 3 meter, height of gallery is 3 meter and distance of square pillar between centers of board is 22.5 meter. What is the strength of pillar? By Selman-Munro formula, strength of pillars is equals to 7.2 multiplied by W के power 0.46 divided by H के power 0.66 megapascal, where W is equals to width of pillar in meter, H is equals to height of pillar in meter, distance of square pillar between centers of board is 22.5 meter. So the width of pillar is equals to 22.5 minus 3 is equals to 19.5 meter. Height of pillar दिया है 3 meter. पिलर विड्थ और पिलर हाइट के वैल्यू को आप फार्मूले में रखेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर आएगा 13.67 मेगापास्कल. 1 मेगापास्कल इज इक्वल्स टू होता है 10.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द स्ट्रेंथ ऑफ पिलर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 139.97. यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 139.97 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मेथड ऑफ वर्किंग पार्ट 2. With increase in moisture content of coal, its option A clinkering tendency during combustion increase, option B calorific value increase, option C none of the options, option D bulk density decreases. Right answer is option A. With increase in moisture content of coal, its clinkering tendency during combustion increase. Next question is, gross and net calorific value of coal will be same if option A hydrogen content is 0, option B carbon content is very low, option C S content is 0, option D S content is very low.
Right answer is option A. Gross and net calorific value of coal will be same if hydrogen content is 0. Next question is, the rock bolts used for reducing the curing time and for increasing safety are option A. Expansion cell bolt, option B. resin bolt, option C. grouted bolt, option D. slot and wedge bolts. Right answer is option B. The rock bolts used for reducing the curing time and for increasing safety are resin bolt. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा, pit prop may be called as quick setting support. Recoverable type of bolt do not require any quick setting cement capsule in the drill hole. In an underground coal mine, a freshly exposed roof can be supported by a temporary support in the form of safari support. The roof bolt that follows the principle of point anchorage is expansion cell bolt. Next question is, proximate analysis of coal determine option A. moisture, sulfur, nitrogen and fixed carbon, option B. none of the other options, option C. moisture, A's, sulfur, volatile matters, option D. moisture, A's, fixed carbon, volatile matters. Right answer is option D. Proximate analysis of coal determine moisture, A's, fixed carbon, volatile matters. Next question is, roof holes are more common if the face is at option A. parallel to the main clit, option B. none of the other options, option C. 60 degree to the main clit, option D. right angle to the main clit. Right answer is option A. Roof holes are more common if the face is at parallel to the main clit. Next question is, which constituent is mainly responsible for easy ignition of coal? Option A. fixed carbon, option B. nitrogen, option C. S, option D. volatile matters. Right answer is option D. Volatile matter is mainly responsible for easy ignition of coal. Next question is, does suppression of water has causes the build to slip? Option B. workers take rest during this period, option C. increased humidity in the mine, option D. blasting efficiency become poor. Right answer is option C. Does suppression of water has increased the humidity in the mine. Next question is, for more output a blast hole should be taken. Option A. along the deep, option B. along the strike, option C. across the deep, option D. across the strike. Right answer is option A. For more output a blast hole should be taken along the strike. Next question is, what is the maximum height or width of advanced heading for dewatering of waterlogged working in the coal mines? Option A. 3 meter, option B. 3.6 meter, option C. 2.4 meter, option D. 2 meter. Right answer is option C. The maximum height or width of advanced heading for dewatering of waterlogged working in the coal mines is 2.4 meter. Next question is, the shaft exceeds 45 meter depth. The persons working at the bottom of the shaft shall be protected by covering which shall be kept lowered within A meters of the bottom of the shaft. A is given by option A. 22.5 meter, option B. 42.5 meter, option C. 32.5 meter, option D. 52.5 meter. Right answer is option A. 22.5 meter. Next question is, which has the least volatile matter and hence is most difficult to ignite? Option A. subbituminous coal, option B. anthracite, option C. coke, option D. bituminous coal. Right answer is option C. coke. Next question is, given below are the following mining method techniques, match the appropriate techniques. P. thick seam extraction का appropriate match होगा 3. incline slicing, board and pillar extraction का होगा half moon, लॉन्ग वॉल फेज डेवलपमेंट का होगा डबल यूनिट फेज, हाइड्रोलिक माइनिंग का होगा जेट कटिंग. आप देख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओवरराइडिंग ऑफ गैलरी इंसिडेंस इज मोस्ट विथ ऑप्शन ए लॉन्ग वॉल मेथड, ऑप्शन बी ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ऑप्शन सी वाइड स्टॉल मेथड, ऑप्शन डी शॉर्ट वॉल मेथड. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओवरराइडिंग ऑफ गैलरी इंसिडेंस इज मोस्ट विथ ब्लास्टिंग गैलरी मेथड. Next question is, in order to get better safety, the optimum gradient of haul road is option A 1 in 16, option B 1 in 8, option C 1 in 5, option D 1 in 6. Right answer is option A. In order to get better safety, the optimum gradient of haul road is 1 in 16. Next question is, match the following. तो देखिए, एक कॉलम में दिया है मेथड ऑफ वर्किंग और दूसरे कॉलम में दिया है सपोर्ट सिस्टम. तो चलिए देखते हैं कि कौन सा करेक्ट मैच होगा. तो ए दिया है रूमेंट पिलर, ये आएगा थर्ड नेचुरली सपोर्टेड क्लास के अंदर, श्रिंकेज स्टॉपिंग आएगा आर्टिफिशियली सपोर्टेड क्लास के अंदर, सब लेवल स्टॉपिंग आएगा अनसपोर्टेड क्लास के अंदर, स्क्वायर सेट स्टॉपिंग आएगा हेवली सपोर्टेड क्लास के अंदर. जब आप चेक करेंगे तो ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन में है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी.
Next question is the process of surface high wall recovery by making opening into the seam without removing the overburden is called option A auger mining, option B strip mining, option C area mining, option D contour mining. Right answer is option A auger mining. Next question is most of the coking coals are option A lignite, option B none of the other options, option C bituminous, option D anthracite. राइट आंसर इज ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द कुकिंग कोल्स आर बिटुमिनस. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा लिग्नाइट में मॉइस्चर कंटेंट होता है 30 to 50%, सब बिटुमिनस में 10 to 30%, बिटुमिनस में 5 to 10%, एंथ्रेसाइट में लेस देन 5%. और यदि फिक्स्ड कार्बन कंटेंट की बात करें तो लिग्नाइट में होता है 20 to 35%, सब बिटुमिनस में 35 to 45%, बिटुमिनस में 45 to 80% और एंथ्रेसाइट में 80 to 96%. यदि ग्रेड की बात करें तो लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड का कोल है विच हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू एंड हाई वोलेटाइल मैटर, जबकि एंथ्रेसाइट सबसे हाई ग्रेड का कोल है विच हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो वोलेटाइल मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल फॉर वर्किंग इन ए शिफ्ट इन ए 5 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट. ध्यान में रखिएगा यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पूछे तो 3n-2 होता है, मिनिमम n होता है, एवरेज 2n-1 होता है, जहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ हेडिंग. इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पूछा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस अवेलेबल फॉर वर्किंग इन ए शिफ्ट इन ए 5 हेडिंग बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट 3 multiplied by 5 minus 2 is equals to 13. So the right answer is option C. Next question is in an open pit mine the market price of fresh copper is rupees 1000 per ton. The cost of mining as reported is 250 per ton. The cost of removal of waste rock is rupees 80 per ton of waste. What will be the stripping ratio? हमें पता है कि स्ट्रिपिंग रेशियो इज इक्वल्स टू होता है मार्केट प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट. क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है 1000 पर टन, प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है 250 पर टन और स्ट्रिपिंग कॉस्ट दिया है 80 रुपीज पर टन. यानी स्ट्रिपिंग रेशियो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 9.39. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है A coal heading 4 meter wide and 2.5 meter high has an advance of 1 meter per cycle. The amount of explosive used in blasting is 6 kg. Taking specific gravity of coal is 1.5. The powder factor is. क्वेश्चन में width दिया है 4 मीटर, हाइट दिया है 2.5 मीटर, एडवांस पर साइकिल यानी पुल दिया है 1 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल दिया है 1.5 मीटर एंड द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज 6 kg. पाउडर फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इन टन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक्सप्लोजिव रिक्वायर्ड इन केजी. वेट ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इन टन इज इक्वल्स टू 4 multiplied by 2.5 multiplied by 1 multiplied by 1.5 इज इक्वल्स टू 15 टन. तो पाउडर फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2.5 टन पर केजी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. पाउडर फैक्टर इज 2.5 टन पर केजी. मेथड ऑफ वर्किंग पार्ट 3. The mining method used in thick and steep coal seam where the slices are neither horizontal nor parallel to the inclination of the seam is called option A transverse slicing, option B incline slicing, option C horizontal slicing, option D integral caving. Right answer is option A transverse slicing. Next question is a long wall face cut by double back shuffle method can be only worked with option A fixed drum shearer, option B single ended ranging drum shearer, option C double ended ranging drum shearer, option D plow. Right answer is option C. A long wall face cut by double back shuffle method can only be worked with double ended ranging drum shearer. इसके अलावा ध्यान में रखिएगा long wall mining method best suitable for flat and moderately flat seam. In a retreating long wall mining method prior to installation of a long wall equipment at face, the face is to be developed by road header. From advanced long wall mining method quick production can be achieved. In Indian long wall mines, support resistance is calculated with due consideration to convergence of the strata above coal seam. Minimum air velocity required at long wall face is 60 meter per minute and power pack is provided at long wall face is to give pressure to power support. लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड के इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा. ये लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड से पूछे गए क्वेश्चन ही हैं जिन्हें मैंने वन लाइनर फॉर्म में फ्रेम किया है. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A shock tube initiating system such as Nonel, option A doesn't need detonators for initiation, option B it can be used in underwater condition, option C it is not affected by static electricity or strong currents, option D it creates lots of noise. Right answer is option C. A shock tube initiating system such as Nonel, it is not affected by static electricity or strong currents. Next question is
In the rock blasting, the term impedance of medium is the product of option A, wave pressure and Poisson's ratio, option B, wave pressure and density of medium, option C, propagation velocity and Poisson's ratio, option D, propagation velocity and density of medium. Right answer is option D. In rock blasting, the term impedance of medium is the product of propagation velocity and density of medium. Next question is, among the following options, the specific energy for rock drilling is lowest in option A, rotary diamond drilling, option B, rotary roller drilling, option C, percussive drilling, option D, jet pushing. Right answer is option C. The specific energy for rock drilling is lowest in percussive drilling. Next question is, pocket and wing technique of pillar extraction is relevant to option A, room and pillar method, option B, board and pillar method, option C, Vonga-Willi method, option D, short wall method. Right answer is option A. Pocket and wing technique of pillar extraction is relevant to room and pillar method. Next question is, apart from the mining of coal, the longwall mining method has been practiced for the mining the deposit of option A, copper, option B, lead and zinc, option C, manganese, option D, pyrite and phosphate. Right answer is option D. Apart from the mining of coal, the longwall mining method has been practiced for the mining the deposit of pyrite and phosphate. Next question is, in longwall caving, the thickness of immediate roof is calculated from option A, bulking factor and width of longwall face, option B, seam thickness and width of longwall face, option C, seam thickness and bulking factor, option D, bulking factor and length of panel. Right answer is option A. In longwall caving, the thickness of immediate roof is calculated from bulking factor and width of longwall face. Next question is, continuous miner and shuttlecock combination is not applicable in mining with option A, rib pillar extraction technique, option B, Vonga-Willi system, option C, room and pillar method, option D, longwall method. Right answer is option B. Continuous miner and shuttlecock combination is not applicable in mining with Vonga-Willi system. Next question is, as per Indian Electricity Rule 1956, the maximum permissible length of a flexible cable used with an electric rope shovel in meter is option A 100 meter, option B 200 meter, option C 300 meter, option D 500 meter. Right answer is option C. As per Indian Electricity Rule 1956, the maximum permissible length of a flexible cable used with an electric rope shovel is 300 meter. Next question is, ore grade for which revenue from the recoverable reserve exactly equals to the cost of mining, treatment and marketing is known as option A, cut-off grade, option B, average grade, option C, break-even grade, option D, liquidation grade. Right answer is option C. Ore grade for which revenue from the recoverable reserve exactly equals the cost of mining, treatment and marketing is known as break-even grade. Next question is, a narrow vertical or inclined excavation made in ore block along the width and height of the stop to continue stopping is termed as option A, trough, option B, slot, option C, undercut, option D, ore pass. Right answer is option B. A narrow vertical or inclined excavation made in the ore block along the width and height of the stop to continue stopping is termed as slot. Next question is, the excess pore pressure in backfill material in a cut-and-fill stop leads to option A, reduction in strength of wall rock, option B, enhancement of bearing strength of fill, option C, loss of shear resistance of fill, option D, prevention of progressive failure of crown pillar. Right answer is option C. The excess pore pressure in backfill material in a cut-and-fill stop leads to loss of shear resistance of fill. Next question is, ratioing stopping method is adopted when ore body is option A, flat and thick, option B, very steep and thick, option C, flat and thin, option D, very steep and thin. Right answer is option D. Ratioing stopping method is adopted when ore body is very steep and thin. Next question is, the diameter of holes in mm commonly used for ring drilling by drifters in sublevel stopping is between option A, 25 and 32 mm, option B, 33 and 44 mm, option C, 45 and 64 mm, option D, 65 and 100 mm. Right answer is option D. The diameter of the holes commonly used for ring drilling by drifter in sublevel stopping is between 65 and 100 mm. Next question is, high production rates coupled with large scale and extensive subsidence results from the method of option A,
top slicing, option B block caving, option C sublevel caving, option D vertical crater retreat mining. Right answer is option B, high production rates coupled with large scale and extensive subsidence results from the method of block caving. Next question is, the equipment that is not used in hard rock metal mining drivage is option A rod header, option B drill jumbo, option C jackhammer, option D dint header. Right answer is option D. The equipment that is not used in hard rock metal mining drivage is dint header. Next question is, the stopping method where a large part of blasted ore is allowed to accumulate in the stop to serve the purpose of providing working platform as well as to support the wall rock is known as option A shrinkage stopping, option B cut and fill stopping, option C square set stopping, option D sublevel stopping. Right answer is option A shrinkage stopping. Next question is, an underground coal mine employing 1200 persons experiences 2 fatal injuries, 6 serious injuries and 8 reportable injuries during the year 2013. The total injury rate per 1000 persons employed for the year is. तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ इंजरीज इज इक्वल्स टू 2 + 6 + 8 इज इक्वल्स टू 16. टोटल नंबर ऑफ कोल वर्कर्स इज इक्वल्स टू 1200. Injury rate is equals to 16 divided by 1200 multiplied by 1000 is equals to 13.34 per 1000 workers. So the total injury rate per 1000 persons employed for the year is 13.34. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन गेट 2008 में भी आया था। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और बात जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे माइनर इंजरी क्या होता है, रिपोर्टेबल इंजरी क्या होता है, सीरियस बॉडीली इंजरी क्या होता है, फैटल क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट स्ट्रेंथ ऑफ ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 इज 912 किलो कैलोरी पर kg. The weight strength of an emulsion explosive of specific gravity 1.2 is 850 kilocalorie per kg. Bulk strength of the emulsion explosive related to ANFO in percentage is. तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इमल्सन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ ऑफ ANFO मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ANFO. ANFO का वेट स्ट्रेंथ दिया है 912 किलो कैलोरी पर kg, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.8, इमल्सन एक्सप्लोजिव का वेट स्ट्रेंथ दिया है 850 किलो कैलोरी पर kg, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.2। जब आप सारे वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 139.8%. सो द बल्क स्ट्रेंथ ऑफ इमल्सन एक्सप्लोजिव रिलेटिव टू ANFO इन परसेंटेज इज 139.8%. मेथड ऑफ वर्किंग पार्ट 4. हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग पाइपलाइन लेआउट शुड बी सच दैट हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग पाइपलाइन लेआउट ऐसा होना चाहिए कि ऑप्शन ए द हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ऑप्शन बी द जियोमेट्रिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी अबोव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ऑप्शन सी द हाइड्रोलिक प्रोफाइल शुड ऑलवेज बी अबोव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ऑप्शन डी द जियोमेट्रिक प्रोफाइल मस्ट बी coincide with हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. Right answer is option A. The hydraulic profile should always be below hydraulic gradient line. Hydraulic profile हमेशा hydraulic gradient line के नीचे होना चाहिए. Next question is surface miner does not have. Surface miner में नहीं होता है. Option A tensioning arrangement for crawler. Option B peak cooling system. Option C differential gear for turning. Option D scraper plate behind the drum. Right answer is surface miner does not have differential gear for turning. Next question is the equipment used for both drop cut and terrace cut in surface mining is. Surface mining में drop cut और terrace cut दोनों के लिए यूज होने वाला इक्विपमेंट है ऑप्शन ए बकेट व्हील एक्सकेवेटर, ऑप्शन बी सॉवेल, ऑप्शन सी सरफेस माइनर, ऑप्शन डी ड्रैग लाइन. Right answer is option A. The equipment used for both drop cut and terrace cut in surface mining is bucket wheel excavator. Next question is reserving method of mining is practiced for option A thick vein deposit, option B massive shallow deposit, option C narrow vein deposit, option D massive deep seated deposit. Right answer is option C. Reserving method of mining is practiced for narrow vein deposit. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग इनहेंसेस प्रोडक्शन इन. इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कौन से माइनिंग मेथड में प्रोडक्शन इनहेंस करता है? ऑप्शन ए
कट एंड फिल माइनिंग, ऑप्शन बी ब्लॉक केविंग, ऑप्शन सी श्रिंकेज स्टॉपिंग, ऑप्शन डी सब लेवल स्टॉपिंग. Right answer is option B. Induced blasting enhances production in block caving. Next question is Nonel is used as down the hole initiator to. Nonel का उपयोग down the hole initiator की तरह किया जाता है. ऑप्शन A to reduce ground vibration, ऑप्शन B provide precise delay, ऑप्शन C avoid generation of air over pressure, ऑप्शन D avoid deflagration of column charge. Right answer is option D. Nonel is used as down the hole initiator to avoid deflagration of column charge. Nonel एक नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर होता है जो कि शॉक ट्यूब इनिशिएशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकोन रोलर बिट इज यूज्ड विथ. ट्राइकोन रोलर बिट का उपयोग किसके साथ होता है? ऑप्शन ए रोटरी परक्यूसिव ड्रिलिंग, ऑप्शन बी डाउन द होल हैमर, ऑप्शन सी रोटरी ड्रिल, ऑप्शन डी जैक हैमर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ट्राइकोन रोलर बिट इज यूज्ड विथ रोटरी ड्रिल. Next question is, as per MMDR Act 1957, for the allocation of lease of minor minerals, option A, the central government is authorized to give the permit, option B, the state government is authorized to give the permit, option C, the state government is authorized to give permit but with the consent of central government, option D, the central government is authorized to give permit but with consent of state government. Right answer is option B. As per MMDR Act 1957, for the allocation of lease of minor minerals, the state government is authorized to give the permit. Next question is, faults are the structural features resulting from. Option A, fracturing of earth crust, option B, high impact tectonic stresses of earth crust, option C, ductile deformation of earth crust, option D, brittle deformation of earth crust. Right answer is option C. Faults are the structural features resulting from ductile deformation of earth crust. Next question is, the ratchet and pawl mechanism in a jackhammer drill. Option A, force down the piston, option B, provides a twisting force to the drill, option C, engage the riffle bar with riffle nut, option D, prevent reverse rotation of riffle bar. Right answer is option D. The ratchet and pawl mechanism in a jackhammer drill prevents reverse rotation of riffle bar. Next question is, post pillar method of stopping is a variant of. Option A, cut and fill stopping, option B, sub-level stopping, option C, vertical crater retreat method, option D, sub-level caving. Right answer is option A. Post pillar method of stopping is a variant of cut and fill stopping. Next question is, cross measure borehole method is used for. Option A, rock slope monitoring, option B, methane drainage, option C, connecting two drifts, option D, subsidence monitoring. Right answer is option B. Cross measure borehole method is used for methane drainage. Next question is, for a mixture of inflammable gases, the lower and upper explosibility limits can be computed using. इनफ्लेमेबल गैसों के मिक्सचर के लिए निचली व ऊपरी विस्फोटकता की सीमा की गणना की जा सकती है. ऑप्शन ए डाल्टन्स लॉ से, ऑप्शन बी ग्राहम्स लॉ से, ऑप्शन सी ली चैटलियर रिलेशन से, ऑप्शन डी बॉयल्स लॉ से. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. फॉर अ मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस द लोअर एंड अपर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट्स कैन बी कंप्यूटेड बाय ली चैटलियर रिलेशन. Next question is, the code for the lowest category of mineral resources under UNFC United Nations Framework Classification System is. Option A 444, option B 123, option C 334, option D 111. आप टेबल में कॉमनली यूज्ड UNFC कोड देख सकते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्स की UNFC कोड 11 है, जबकि लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्स की UNFC कोड 334 है. सो द राइट ऑप्शन इज सी. द कोड फॉर द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज अंडर UNFC सिस्टम इज 334. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रिजर्व मीन्स. ऑप्शन ए आइडेंटिफाइड रिसोर्स, ऑप्शन बी identified and techno-economical viable resources, option C hypothetical resources, option D inferred resources. Right answer is option B. As per classification of mineral resources, reserve means identified and techno-economical viable resources.
Next question is, stone dust barrier in underground coal mines are used to arrest option A, black dam explosions, option B, air blast, option C, fire dam explosions, option D, coal dust explosions. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टोन डस्ट बैरियर का उपयोग अंडरग्राउंड कोल माइन में कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले स्टोन डस्ट बैरियर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टोन डस्ट बैरियर इज इरेक्टेड इन सेकंड एंड थर्ड डिग्री गैसेस सीम and also may be erected in first degree gaseous seam if regional inspector desires। स्टोन डस्ट बैरियर दो टाइप का होता है, लाइट बैरियर, हैवी बैरियर। लाइट बैरियर को प्राइमरी बैरियर भी बोलते हैं और हैवी बैरियर को सेकेंडरी बैरियर भी बोलते हैं। डस्ट लोडिंग ऑन सेल्फ, लाइट बैरियर 30 kg पर मीटर, हैवी बैरियर 60 kg पर मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द फेस, लाइट बैरियर 45 to 110 मीटर, हैवी बैरियर 135 to 365 meter in board and pillar method, 180 to 320 meter in long wall method। नॉर्मली 3 से 7 kg स्टोन डस्ट की रिक्वायरमेंट होती है पर टन कोल आउटपुट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेस इन ए वाइंडिंग सिस्टम आर टू प्रिवेंट ऑप्शन ए, ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग, ऑप्शन बी, स्लो बैंकिंग एंड लोड बैलेंसिंग, ऑप्शन सी, ओवरलोडिंग एंड लोड बैलेंसिंग, option D, over speeding and load balancing। Right answer is option A, the function of automatic contrivances in a winding system are to prevent over speeding and over winding। Next question is, a low grade deep seated ore body dipping at 70 degree has strike length of 2 km and width of 100 meter। The ore body and wall rocks are weak and fractured। The preferred method of mining is option A, shrinkage stopping, option B, cut and fill stopping, option C, block caving, option D, room and pillar stopping। Right answer is option C, in given conditions the preferred method of mining is block caving। Next question is, the availability of water in the root zone of plant use is maximum in the case of option A, sand, option B, loam, option C, clay, option D, gravel। Right answer is option B, the availability of water in the root zone of plant use is maximum in the case of loam। Next question is, the purpose of rotating a reeling hygrometer in hygrometer survey is to option A, weight the cotton wick with water thoroughly, option B, maintain constant temperature of water in the container, option C, create steady state of evaporation of moisture from wet bulb surface, option D, prevent the heat produced by cap lamp of observer from affecting the readings। Right answer is option C, the purpose of rotating a reeling hygrometer in hygrometer survey is to create steady state of evaporation of moisture from the wet bulb surface। Method of working part 5, exposure of weak group in junctions of development district in a coal mine can be decreased by option A, increasing dimensions of panel barrier, option B, stretching side walls, option C, increasing support density at junctions, option D, staggering the junctions। Right answer is option D, exposure of weak group in junctions of development district in a coal mine can be decreased by staggering the junctions। Next question is, Lenz algorithm is applied to determine option A, mill cutoff grade, option B, mine production rate, option C, operating cost, option D, ultimate pitch। Right answer is option A, Lenz algorithm is applied to determine mill cutoff grade। Next question is, semi-variogram modeling is used for reserve estimation of mineral deposits by option A, polygon method, option B, distance weighting method, option C, geostatistical method, option D, nearest neighbor method। Right answer is option C, semi-variogram modeling is used for reserve estimation of mineral deposit by geostatistical method। Next question is, a deeply seated ore body dips at 70 degree having an average width of 60 meter. The ore body, hanging wall and foot wall are competent. The suitable stopping method for this ore body is option A, post pillar cut and fill, option B, shrinkage stopping, option C, transverse sublevel caving, option D, transverse sublevel open stopping। Right answer is option D, in above condition the suitable stopping method for this ore body is transverse sublevel open stopping। Next question is, the yellow buoy formed due to acid mine drainage mainly consists of option A,
ferrous hydroxide, option B ferrous sulfate, option C ferric hydroxide, option D ferric sulfate. Right answer is option C. The yellow buoy formed due to acid mine drainage mainly consists of ferric hydroxide. Next question is, identify the correct statement. Nonel is used for surface connection of the blast holes in order to, option A, achieve better water resistance over detonating fuse, option B, have a precise delay timing, option C, provide noiseless shock front movement, option D, avoid deflagration. Right answer is option C. Nonel is used for surface connection of the blast holes in order to provide noiseless shock front movement. Next question is, parallel holes at right angles to the face with some holes uncharged are associated with the following short hole pattern. Option A, drag cut, option B, wedge cut, option C, pyramid cut, option D, burned cut. Right answer is option D. Parallel holes at right angle to the face with some holes uncharged are associated with burned cut pattern. Next question is, the support system followed along the GOP edge in a डिप्लरिंग पैनल is. डिप्लरिंग पैनल में गोप एज के अलॉन्ग कौन सा सपोर्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है? ऑप्शन ए रोप स्टिचिंग, ऑप्शन बी केबल बोल्टिंग, ऑप्शन सी वुडन और स्टील चॉक, ऑप्शन डी हाइड्रोलिक प्रॉप. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द सपोर्ट सिस्टम फॉलोड अलॉन्ग द गोप एज इन ए डिप्लरिंग पैनल इज वुडन और स्टील चॉक. इसके अलावा कुछ अन्य सपोर्टिंग मेथड के नाम याद रखिएगा जो फ्रेशली एक्सपोज्ड रूप को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे सफारी सपोर्ट, फ्रिक्शन प्रॉप्स, hydraulic props with or without link bar, pit props, screw prop, triangular tabular steel and wooden chocks, square tabular steel chocks with wooden slippers, roof bolts, roof stitching. Next question is, in metalliferous mines, the sublevel interval does not depends on option A, capacity of drilling equipment, option B, capacity of loading equipment, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ ऑफ रिप पिलर, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ ऑफ वॉल रॉक. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. मेटलिफेरस माइन में सब लेवल इंटरवल लोडिंग इक्विपमेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडरग्राउंड कोल माइंस आर इन प्रिंसिपल वेंटिलेटेड बाय एग्जॉस्टिंग सिस्टम सो दैट ऑप्शन ए स्पॉन्टेनियस हीटिंग रिस्क इज reduced, ऑप्शन बी फ्यूम्स कैन बी क्विकली रिमूव्ड इन केस ऑफ एन अंडरग्राउंड फायर, ऑप्शन सी build up methane concentration is decreased, option D, cool and fresh intake air can enter underground. Right answer is option C. Underground coal mines are in principle ventilated by exhausting system so that build up methane concentration is decreased. Next question is, identify the wrong statement. Pit bottom airlock. Option A, prevents the short circuiting of air when the flow is reversed in coal mines. Option B, has at least 3 doors. Option C, has at least one door that has provision of latching. Option D, all doors are in principally designed to open towards high pressure side of the air. Here, the wrong statement is has at least one door that has provision for latching. So, the right answer is option C. Next question is, identify the wrong statement. The temperature inversion of the atmosphere in surface mines aggravates the problem of option A, airborne dust, option B, noise, option C, ground vibrations, option D, visibility. The temperature inversion of the atmosphere in surface mines not aggravates the problem of ground vibration. So, here the wrong statement is ground vibration. So, the right answer is option C. Next question is, out of the support categories given for an underground coal mine, identify the active support. Option A, wire mesh, option B, shotcrete, option C, fully grouted roof bolt, option D, hydraulic prop. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. दिए गए सपोर्ट कैटेगरीज में से जो कि अंडरग्राउंड कोल माइन में उपयोग किए जाते हैं, हाइड्रोलिक प्रॉप एक्टिव सपोर्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैसिव सैंडस्टोन इन इमीडिएट रूप डिलेज द लोकल फॉल इन द गोप ऑफ ए कोल माइन. अंडर दिस कंडीशंस क्रशिंग ऑफ पिलर एट आउटबे साइड इज कॉल्ड. ऑप्शन ए, कोल बम, option B, overriding of pillars, option C, stiffening of pillars, option D, spalling of pillars. Right answer is option B. Massive sandstone in immediate roof delays the local fall in the gope of a coal mine. Under these conditions, crushing of pillar at outbay side is called overriding of pillars.
Next question is, the excess pore pressure in backfill material in a cut and fill stop leads to option A, reduction in strength of wall rock, option B, enhancement of bearing strength of fill, option C, loss of shear resistance of fill, option D, prevention of progressive failure of crown pillar. Right answer is option C. The excess pore pressure in backfill material in a cut and fill stop leads to loss of shear resistance of fill. Next question is, the primary purpose of cut holes for blasting in an underground drivage is to option A, provide additional preface, option B, have a smooth surface after blasting, option C, prevent overbreakage, option D, reduce noise. Right answer is option A. The primary purpose of cut holes for blasting in an underground drivage is to provide additional preface. Next question is, in fully mechanized board and pillar mining system, winning of coal and its transportation from the face is commonly carried out with combination of option A, continuous miner, shuttle car, feeder breaker and belt conveyor, option B, continuous miner, LHD, feeder breaker and chain conveyor, option C, continuous miner, SDL, feeder breaker and belt conveyor, option D, continuous miner, shuttle car, feeder breaker and chain conveyor. एक कंटिन्यूस माइनर के साथ दो शटल कार और एक फीडर ब्रेकर यूज होता है जो कि बेल्ट कन्वेयर से कनेक्टेड होता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इन फुल्ली मैकेनाइज्ड बोर्ड एंड पिलर माइनिंग सिस्टम, विनिंग ऑफ कोल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फेस इज कॉमनली कैरिड आउट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, फीडर ब्रेकर एंड बेल्ट कन्वेयर. कंटिन्यूस माइनर में 3 यूनिट होता है, कटिंग यूनिट, गैदरिंग यूनिट, कन्वेइंग यूनिट. कटिंग यूनिट, दिस यूनिट्स कट द कोल up to depth of 0.6 meter which falls on the floor. Gathering unit, this unit gathers the coal at the floor level and transfer to the conveying unit. Third है conveying unit. Conveying unit transfer the coal to the shuttle car. Continuous miner 3 टाइप का होता है, रिपर टाइप, बोरर टाइप, ऑगर टाइप. कंटिन्यूस माइनर यूज करने के कई सारे एडवांटेजेस है, जैसे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग आर टोटली एलिमिनेटेड, बेटर रूप कंट्रोल एट द फेस, रेट ऑफ फेस एडवांस इज हाई, less cycle time for winning coal, accident are reduced, high output men perceived, concentrated work with better supervision. Next question is, in cut and fill stop, the main purpose of backfilling is to option A, reduce ore dilation, option B, prevent high stress concentration in field domain, option C, prevent displacement due to dilation of fractured wall rock, option D, improve ore rehandling. Right answer is option C. In cut and fill stop, the main purpose of backfilling is to prevent displacement due to dilation of fractured wall rock. Next question is, which one of the following is the most likely mode of slow failure for wedge dump? Option A, circular, option B, wedge, option C, plane, option D, toppling. Right answer is option A. Circular failure is the most likely mode of slow failure for wedge dump. Next question is, in a mine wedge dump of pH 5.2 can be neutralized by adding option A, urea, option B, calcium carbonate, option C, sulfuric acid, option D, sodium carbonate. Right answer is option B. A mine wedge dump of pH 5.2 can be neutralized by adding calcium carbonate. Method of working, part 6. Long hole drilling with crater blasting is used for construction of option A, winch, option B, shaft, option C, raise, option D, decline. Right answer is option C. Long hole drilling with crater blasting is used for construction of raise. Next question is, reel stopping method is a form of option A, block caving, option B, artificial support stopping, option C, underhand stopping, option D, overhand stopping. Right answer is option D. Reel stopping method is a form of overhand stopping. Next question is, incubation period is not related to option A, crossing point temperature, option B, panel size, option C, seam thickness, option D, explosibility of coal dust. Right answer is option D. Incubation period is not related to explosibility of coal dust. यानी incubation period का coal dust की विस्फोटकता से कोई लेना देना नहीं है. Incubation period और spontaneity, इस पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे बढ़ने से पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. स्पॉन्टेनिसिटी यानी स्वतः दहन पाया जाता है जब वोलेटाइल मैटर 25% या उससे अधिक हो एवं मॉइस्चर कंटेंट 7% से लेकर 15% के बीच हो.
ऑक्सीजन कंटेंट 2% या उससे कम है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होगा। इंडियन कोल का इंक्यूबेशन पीरियड 6 मंथ से लेके 18 मंथ के बीच वेरी करता है। कुछ फैक्टर्स है जिन पर इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है, जैसे नेचर एंड टाइप ऑफ कोल, नेचर ऑफ एडजॉइनिंग स्ट्रेटा, मेथड ऑफ वर्किंग टू बी एडॉप्टेड, presence of geological disturbance, percentage extraction during depleting, and root behavior. Next question is, the equipment that is not used in hard rock metal mining drivage is, equipment जो कि hard rock metal mining drivage में यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए रोड हेडर, ऑप्शन बी ड्रिल जंबो, ऑप्शन सी जैक हैमर, ऑप्शन डी डिंट हेडर। Right answer is option D. The equipment that is not used in hard rock metal mining drivage is dint header. Next question is, equipment used in mining pleasure deposits is, pleasure deposit में mining के लिए यूज होने वाला इक्विपमेंट है। ऑप्शन ए ऑगर, ऑप्शन बी वैगन ड्रिल, ऑप्शन सी रोप सॉ, ऑप्शन डी रिफल बॉक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिफल बॉक्स इज यूज्ड इन माइनिंग प्लेजर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, apart from mining of coal, the longwall mining method has been practiced for mining the deposits of, coal mining के अलावा और कौन से डिपॉजिट्स के लिए लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लेड एंड जिंक, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी पायराइट एंड फॉस्फेट। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अपार्ट फ्रॉम द माइनिंग ऑफ कोल, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर माइनिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ पायराइट एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, continuous miner and shuttle car combination is not applicable in mining with, option A rib pillar extraction technique, option B Wonga-Wily system, option C room and pillar method, option D longwall mining method. Right answer is option D, continuous miner and shuttle car combination is not applicable in mining with longwall mining method. Next question is, the stopping method where a large part of blasted ore is allowed to accumulate in the stop to serve the purpose of providing working platform for stopping as well as to support the wall rock is known as, option A shrinkage stopping, option B cut and fill stopping, option C square set stopping, option D sublevel stopping. Right answer is option A, for the above purpose stopping method used is shrinkage stopping. Next question is, a longwall face cut double back shuffle method can be only worked with, option A fixed drum shearer, option B single ended ranging drum shearer, option C double ended ranging drum shearer, option D plow. Right answer is option C, longwall face cut double back shuffle method can be only worked with double ended ranging drum shearer. आगे बढ़ने से पहले लॉन्गवॉल मेथड के बारे में कुछ और जान लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्गवॉल सिस्टम ऑफ माइनिंग इज डन बाय टू मेथड, लॉन्गवॉल एडवांसिंग मेथड एंड लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग मेथड। Both method can be done either by caving or by stowing. Favorable condition for longwall method: seam thickness 0.6 to 2.4 meter, moderate depth, inclination flat to 20 degree, depth more than 500 meter. Mechanized longwall face में यूज होने वाले मशीनरीज: डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम shearer, armored face conveyor, powered support, gate built conveyor, stage loader, in-seam miner, road header. Next question is, in an underground coal mine, a freshly exposed roof can be supported by a temporary support in the form of, option A triangular chocks, option B screw props, option C safari support, option D hydraulic prop. Right answer is option C. In an underground coal mine, a freshly exposed roof can be supported by a temporary support in the form of safari support. Next question is, pocket and wing technique of pillar extraction is related to, option A board and pillar method, option B room and pillar method, option C Wonga-Wily method, option D short wall method. Right answer is option A, pocket and wing technique board and pillar method से संबंधित है। Next question is, reserving stopping method is adopted when ore body is, option A flat and thick, option B very steep and thick, option C flat and thin, option D very steep and thin. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी स्टीप एवं थिन ओर बॉडी के लिए रिजर्विंग स्टॉपिंग मेथड अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द DGMS नॉर्म्स द सेवरिटी इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शन ए फैटेलिटी रेट, ऑप्शन बी सीरियस इंजरी रेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज, ऑप्शन डी एक्सीडेंट प्रोननेस ऑफ माइन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सेवरिटी इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ एक्सीडेंट प्रोननेस ऑफ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following supports does not require a power pack for its operation? Option A chalk shield support,
Option B, open circuit hydraulic prop. Option C, closed circuit hydraulic prop. Option D, alpine breaker line support. Right answer is option C, closed circuit hydraulic prop does not require a power pack for its operation. Next question is, the ratchet and pawl arrangements in percussive drill machine helps in option A, providing required rotational speed. Option B, indexing at the bit rock interface. Option C, regulating airflow in forward and return strokes of the piston. Option D, engaging the bit with the rock between the blows. Right answer is option B, the ratchet and pawl arrangements in percussive drill machine helps in indexing at the bit rock interface. Next question is, Zena barrier are associated with option A, increased safety apparatus. Option B, statistically safe apparatus. Option C, flame-proof apparatus. Option D, intrinsic safety apparatus. Right answer is option D, Zena barrier are associated with intrinsic safety apparatus. Next question is, the phenomena of fretting or necking of pillars in room and pillar stopping is common in the pillars formed in option A, massive rock with very high pillar height to width ratio. Option B, regularly jointed rock with high pillar height to width ratio. Option C, massive rock with low pillar height to width ratio. Option D, transversely jointed rock with low pillar height to width ratio. Right answer is option B, the phenomena of fretting of pillars in room and pillar stopping is common in pillar formed in regularly jointed rock with high pillar height to width ratio. Next question is, in context of surface mine development, a box cut is defined as option A, initial cut made to open a mine. Option B, final cut to close the mine. Option C, any cut which looks like an open box. Option D, the cut to extend the haul road. Right answer is option A, in context of surface mine development, a box cut is defined as initial cut made to open a mine. Next question is, in an open cast mine bench, failure has occurred in which a triangular portion is come out. The type of failure is option A, curved failure. Option B, wedge failure. Option C, toppling failure. Option D, linear failure. Right answer is option B, the type of failure is wedge failure. Next question is, wide stall method is practiced by option A, stocking of pillars. Option B, widening of galleries. Option C, partial extraction. Option D, heightening of galleries. Right answer is option B, wide stall method is practiced by widening of galleries. Method of working, part 7. Board and pillar workings in two flat and gently dipping contiguous seams should be developed with their roadways and pillars perfectly. Option A, diagonal. Option B, overlapping. Option C, step diagonal. Option D, circular. Right answer is option B, board and pillar workings in two flat and gently dipping contiguous seams should be developed with their roadways and pillars perfectly overlapping. Next question is, piling method, Kazan method, freezing method, cementation process are some special method of loose unstable ground with or without presence of water. Option A, longwall mining. Option B, drifting. Option C, shaft sinking. Option D, driving galleries in coal seam. Right answer is option C, piling method, Kazan method, freezing method एवं सीमेंटेशन प्रोसेस शाफ्ट सिंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल मेथड्स हैं। आगे बढ़ने से पहले शाफ्ट सिंकिंग के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल मेथड्स के बारे में जान लेते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू लूज डिपॉजिट्स ऑफ सैंड अप टू 20 मीटर इज पिलिंग सिस्टम। द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू लूज डिपॉजिट्स ऑफ सैंड अप टू 60 मीटर ओपन कैजन। The method of sinking through alternate loose and tough strata up to 60 meter forced drop. The method of sinking where there is ground filling problem or considerable inrush of water up to depth of 30 meter pneumatic chasm. The method of sinking in unstable or friable strata with heavy inrush of water freezing method. The method of sinking used through any fissured water bearing strata except in running sand is cementation. Next question is, factor of safety of slope of an open cast mine. Option A goes up. Option B reduces. Option C remains unchanged. Option D fluctuates with increase in pore water pressure. Right answer is option B. Factor of safety of slope of an open cast mine reduces with increase in pore water pressure. Next question is, pick the odd one out which is not contributing to the qualification process. Option A, climatic conditions. Option B, time. Option C, depth of burial. Option D, method of working. Right answer is option D, method of working
is not contributing to the qualification process. यानी क्वालिफिकेशन प्रोसेस में मेथड ऑफ वर्किंग का कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल मोड ऑफ स्लोप फेलियर. ऑप्शन ए प्लेनर फेलियर, ऑप्शन बी रोटेशनल फेलियर, ऑप्शन सी टॉपलिंग फेलियर, ऑप्शन डी shear failure. Right answer is option D. Shear failure is not a general mode of slope failure. Next question is minimum thickness of parting to be left between two sections of thick seam. Option A 3 meter, option B 5 meter, option C 7 meter, option D 1 meter. Right answer is option A. Minimum 3 meter thickness of parting to be left between two sections of a thick seam. Next question is productivity of a highly mechanized coal mine depends on option A percentage availability of equipment, option B percentage utilization of equipment, option C manpower availability, option D percentage availability of equipment and percentage utilization of equipment. Right answer is option D. Productivity of a highly mechanized coal mine depends on percentage availability of equipment and percentage utilization of equipment. Next question is in longwall mining, advanced supporting of gate roads up to 30 meter from the face is required due to option A back abutment pressure, option B yielding pressure, option C front abutment pressure, option D advanced load. Right answer is option C. In longwall mining, advanced supporting of gate roads up to 30 meter from the face is required due to front abutment pressure. Next question is an overhead line is passing over haul road. What should be the minimum clearance of lowest conductor over haul road? Option A at least 15 meter, option B at least 10 meter, option C at least 12 meter, option D at least 5 meter. Right answer is option C. The minimum clearance should be at least 12 meter. Next question is what is the maximum height or width of advanced heading for dewatering of waterlogged workings in coal mines? Option A 2 meter, option B 2.4 meter, option C 2.8 meter, option D 3 meter. Right answer is option B. The maximum height and width of advanced heading for dewatering of waterlogged workings in coal mines is 2.4 meter. Next question is which of the following statement holds good for longwall mining? Option A maximum tensile stress remains at the edge of the goup. Option B maximum tensile stress remains at the center of the goup. Option C maximum tensile stress shifts from the edge to the center of the goup. Option D maximum tensile stress shall be away from the chain pillars. Right answer is option B. In longwall mining, maximum tensile stress remains at the center of the goup. Next question is coal is a option A igneous formation, option B metamorphic formation, option C sedimentary formation, option D magmatic formation. Right answer is option C. कोल एक सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द गिवन मेथड्स ऑफ वर्क ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग ऑफ ए कोल सीम इन सेम जियो माइनिंग कंडीशंस which method will cause maximum surface subsidence? Option A advanced long walling with stowing, option B wide and stall method, option C board and pillar working with caving, option D board and pillar working with stowing. Right answer is option C. In same geomining conditions, board and pillar working with caving will cause maximum surface subsidence. Next question is which of the following equipment is more suited for site casting in open cast mines? Option A excavator, option B electric shovel, option C rope shovel, option D drag line. Right answer is option D. Most suitable equipment for site casting in open cast mines is drag line. Next question is burn site drilling apparatus is used for option A underground short hole drilling, option B surface blast holes, option C drilling long holes for dewatering, option D drilling long holes for getting core from depth. Right answer is option C. Burn site drilling apparatus is used for drilling long holes for dewatering. Next question is lignite deposit is found in option A Rajasthan, option B Jharkhand, option C Chhattisgarh, option D Madhya Pradesh. Right answer is option A. Lignite deposit is found in Rajasthan. Next question is Jankovic method is basically a variant of option A inclined slicing in descending order with caving,
Option B, horizontal slicing in ascending order with stowing. Option C, inclined slicing in ascending order with stowing. Option D, inclined slicing in descending order with stowing. Right answer is option B. Jankovic method is a variant of horizontal slicing in ascending order with stowing. Next question is, interburden means option A, coal seams, option B, overburden, option C, strata between coal seams, option D, cell bands. Right answer is option C. Interburden means strata between coal seam. Next question is, typical face length in Indian longwall mines lies in the range of option A, 120 to 150 meter, option B, 200 to 250 meter, option C, 300 to 350 meter, option D, 150 to 200 meter. Right answer is option A. Typical face length in Indian longwall mines lies in the range of 120 to 150 meter. Method of working, part 8. There are different types of man riding systems in practice. Out of this, chairlift type has become more popular. This is due to option A, low capital cost, option B, convenience in riding, option C, smooth travel, option D, all of the options. Right answer is option D, all of the options. Chairlift type has become more popular because of low capital cost, convenience in riding, smooth travel. Horizontal entry of an underground working of a hilly deposit is known as option A, vertical shaft, option B, inclined shaft, option C, decline, option D, edit. Right answer is option D. Horizontal entry of an underground working of a hilly deposit is known as edit. इसके अलावा ध्यान रखिएगा, डीप डिपॉजिट के लिए शाफ्ट यूज करते हैं, जबकि सैलो डिपॉजिट के लिए इंक्लाइन यूज करते हैं. Coal seam origin in Indian conditions can be attributed to which of the following theories? Option A, drift, option B, in situ, option C, tectonic, option D, drift and in situ. Right answer is option A. Coal seam origin in Indian conditions can be attributed to drift theory. Relate the most distinguishing features of Jharia coalfields among the all Indian coalfields. Option A, multiple seams with a varied thickness. Option B, couple of seams with identical thickness. Option C, seam with dirt bands. Option D, thick seams. Right answer is option A. Jharia coalfields has multiple seams with varied thickness. Cell is not suitable as immediate roof in underground mining because option A, it has high affinity to moisture and depart from roof easily. Option B, it gives no warning before falling. Option C, it can't be supported. Option D, it gives bad sound while testing. Right answer is option A. Cell is not suitable as immediate roof in underground mining because it has high affinity to moisture and depart from roof easily. Solid blasting in any development phase of a gassy degree 2 seam can be done only if percentage of inflammable gas is less than option A 0.1%, option B 0.3%, option C 0.5%, option D 1.25%. Right answer is option C. According to DGMS norms, डिग्री 2 सिम में इन्फ्लेमेबल गैस 0.5% या उससे कम है तभी सॉलिड ब्लास्टिंग किया जा सकता है. इसके अलावा सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए और भी कई सारी शर्तें हैं जो DGMS के अकॉर्डिंग जरूरी है. सॉलिड ब्लास्टिंग पर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं. कंटिन्यूस माइनर्स आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग फॉर ऑप्शन ए डेवलपमेंट ओनली, ऑप्शन बी डिप्लेयरिंग ओनली, ऑप्शन सी डेवलपमेंट एंड डिप्लेयरिंग बोथ, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग वॉल पैनल. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. अंडरग्राउंड कोल माइन में कंटिन्यूस माइनर डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग दोनों के लिए यूज होता है. प्राइम कोकिंग कोल इज फाउंड इन ऑप्शन ए ओनली झरिया कोल फील्ड, ऑप्शन बी झरिया एंड रानीगंज कोल फील्ड्स, ऑप्शन सी झरिया एंड तलचर कोल फील्ड्स, ऑप्शन डी ओनली तलचर कोल फील्ड्स. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. कोकिंग कोल मुख्यतः झरिया एवं रानीगंज कोल फील्ड्स में पाया जाता है. झारखंड स्थित झरिया व रानीगंज कोलफील्ड से कोकिंग कोल का प्रोडक्शन करने वाली कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड. द वर्कर हु कैरीज एक्सप्लोजिव्स एंड ऑल्सो असिस्ट द शॉट फायरर इन ब्लास्टिंग एज वेल एज गार्डिंग द एंट्रीज और अप्रोचेस टू द साइट ऑफ ब्लास्टिंग इज नोन एज ऑप्शन ए शॉट फायरर, ऑप्शन बी माइनिंग सरदार, ऑप्शन सी एक्सप्लोजिव कैरियर, ऑप्शन डी एक्सप्लोडर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. एक्सप्लोजिव कैरियर ही वह वर्कर है
जो एक्सप्लोजिव को कैरी करता है और शॉर्ट फायर को ब्लास्टिंग के लिए मदद करता है। साथ ही साथ ब्लास्टिंग साइट के एंट्री या अप्रोच को भी गार्ड करता है। कैविटेशन इन हाइड्रोलिक स्टोइंग पाइप रेंज इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए इनकरेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल, ऑप्शन बी कोरोजन इन पाइप्स, ऑप्शन सी hydraulic gradient lying above hydraulic profile. Option D, high humidity at stowing location. Right answer is option A. Cavitation in hydraulic profile pipe range is caused due to incorrect hydraulic profile. Which of the following features should be shown in water danger plan? Option A, river, stream, water course, reservoir. Option B, surface control lines, dikes, fault sorter geology. Option C, highest flood level of the area. Option D, all of the above. Right answer is option D, all of the above. So, the water danger plan shows river, stream, water course, reservoir, surface control lines, dikes, fault sorters geology, highest flood level of the area. Which of the following features is true regarding workers' participation in safety management? Option A, safety committee. Option B, bipartite committee. Option C, tripartite committee. Option D, all of the above. Right answer is option D, all of the above. So, the features which is true regarding workers' participation in safety management is safety committee, bipartite committee, tripartite committee. Which of the following term is not related to open cast mining? कौन सा टर्म ओपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए बॉक्स कट, ऑप्शन बी हाई वॉल, ऑप्शन सी क्रेस्ट, ऑप्शन डी विंज. Right answer is option D. Winch is the term which is not related to open cast mining. As per the provision, how much drinking water must be provided to the mine workers? As per provision, mine workers को कितना drinking water provide किया जाना चाहिए per day? Option A 1.5 liter, option B 1.3 liter, option C 4 liter, option D 2 liter. Right answer is option D. As per provision, 2 liter of drinking water must be provided to mine workers. Which of the following is most difficult in opening open cast mines? Option A, land acquisition and rehabilitation. Option B, manpower recruitment. Option C, green belt vegetation. Option D, customer selection. Right answer is option A, land acquisition and rehabilitation is most difficult in opening open cast mines. The earliest indication of spontaneous heating of coal can be given by option A, MAC of carbon dioxide. Option B, sweating. Option C, temperature rise. Option D, none of the above. Right answer is option B. The earliest indication of spontaneous heating of coal can be given by sweating. The grade which is available from a property after actual mining is option A, computed grade. Option B, run of mine grade. Option C, effective grade. Option D, pit head grade. Right answer is option B. The grade which is available from a property after actual mining is run of mine grade. Burden is a distance between option A, last row and edge line of the bench. Option B, first row and second row. Option C, first row and edge line of the bench. Option D, depth of hole. Right answer is option C. Burden is a distance between first row and edge line of the bench. Burden फर्स्ट रो और बेंच के एज लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है. टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए लोड फैक्टर, ऑप्शन बी एज फैक्टर, ऑप्शन सी यील्ड फैक्टर, ऑप्शन डी पाउडर फैक्टर. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए पाउडर फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है. वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा द टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड ऑप्शन ए 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 70 डिग्री सेल्सियस. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. जब हॉट स्टार्टा में ब्लास्टिंग करेंगे तो होल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा. मेथड ऑफ वर्किंग पार्ट 9. इन कंटिग्यूअस सीम्स द पार्टिंग बिटवीन टू सीम इज विद इन. कंटिग्यूअस सीम में दो सीम के बीच पार्टिंग कितने से कम होना चाहिए? ऑप्शन ए 13 मीटर, ऑप्शन बी 15 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन डी 14 मीटर. Right answer is option C. In contiguous seam, the parting between two seam is within 9 meter. The राजमहल माइन डिजास्टर of 2016 was due to 2016 में हुए राजमहल माइन डिजास्टर इसके कारण हुआ था. ऑप्शन ए ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी एक्सप्लोजन ऑफ गैस,
Option D, startup failure. Right answer is option D. The Rajmahal mine disaster of 2016 was due to startup failure. थिकेस्ट सिम ऑफ कोयले का थिकेस्ट सिम है ऑप्शन ए तुर्रा, ऑप्शन बी तुरेवा, ऑप्शन सी जिनगुर्दा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. थिकेस्ट सिम ऑफ कोल इज जिनगुर्दा. विमेन इज अलाउड टू वर्क इन माइन. महिलाएं माइन में काम करने के लिए अलाउ किए जाते हैं. ऑप्शन ए बिटवीन 7 PM to 6 AM, ऑप्शन बी बिटवीन 6 AM to 7 PM, ऑप्शन सी बिटवीन ब्रेक टाइम ओनली, ऑप्शन डी बिटवीन 10 AM to 5 PM. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. विमेन इज अलाउड टू वर्क इन माइन बिटवीन 6 AM to 5 PM. बर्म इज ऑप्शन ए प्रोवाइडेड ऑन द एज ऑफ द हॉल रोड्स, ऑप्शन बी स्पेसिंग बिटवीन 2 rows of the holes, ऑप्शन सी it is features of a machine, option D it is related with drilling. Right answer is option A. Berm is provided on the edge of the haul roads. In open cast mine, highest gradient of any road is. ओपन कास्ट माइन में किसी भी रोड का हाईएस्ट ग्रेडियंट हो सकता है. ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/8. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. In open cast mine, highest gradient of any road is 1/10. The gradient of haul road is, haul road का gradient होता है ऑप्शन ए 1/12, ऑप्शन बी 1/20, ऑप्शन सी 1/16, ऑप्शन डी 1/18. Right answer is option C. The gradient of haul road is 1/16. Its slope is the angle made by the imaginary line joining the option A topmost toe of the bench to the bottommost toe of the bench, option B topmost crest of the bench to the bottommost toe of the bench, option C topmost crest of the bench to the bottommost crest of the bench, option D average of all bench angle. Right answer is option B. Its slope is the angle made by imaginary line joining the topmost crest of the bench to the bottommost toe of the bench. In any working below ground, there should be provided at least 2 shafts or 2 incline, which should be away from each other by minimum distance. Option A 12.5 meter, option B 13.5 meters, option C 14.5 meters, option D 15.4 meters. Right answer is option B. किसी भी below ground working में 2 shaft या 2 incline प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिसके बीच डिस्टेंस कम से कम 13.5 मीटर होना चाहिए. In case of an open cast mine, if the pit wall is too steep to allow suitable bends, the layout of haul road geometry selected should be option A switchback, option B spiral, option C zigzag, option D none of this. Right answer is option B. In this condition, layout of haul road geometry selected should be spiral. Support of a slip or fault plane on both sides are done because option A it indicates the weaker section of the area, option B it is a weaker zone of the mine, option C a slip or fault plane is the line of fracture of strata and very difficult to hold it, option D none of the above. Right answer is option C. Support of a slip or fault plane on both sides are done because a slip or fault plane is the line of fracture of strata and very difficult to hold it. Coal is left with the shell in the roof in underground working because of option A shell is weak in nature, option B it has weathering effect, option C it reacts with coaly surface, option D it has greater affinity to absorb moisture and get departed from immediate roof. Right answer is option D. Coal is left with the shell in the roof in underground working because of it has great affinity to absorb moisture and get departed from immediate roof. In a mine, a big roof fall has taken place in main intake airway. The fan drifts water gauze. Option A will remain unaffected. Option B will decrease. Option C will register and increase. Option D will increase temporarily only when fall takes place. Right answer is option C. The fan drifts water gauze will register and increase. Mechanized open cast mining in India is economically feasible at present if the coal and overburden ratio is approximately up to.
Option A 1 in 2, Option B 1 in 4, Option C 1 in 8, Option D 1 in 10. Right answer is option C. Coal and overburden ratio up to 1 in 8 is economically feasible in India for mechanized open cast mining. The drill holes which are driven vertically and make the sites of excavation are described as option A easers, option B simpers, option C dressers, option D hole directors. Right answer is option C. The drill holes which are driven vertically and make the sites of excavation are described as dressers. GOP in relation to the undergone working means option A coal is about to be extracted, option B people has lawful access, option C coal has been extracted but still a working place, option D coal has been extracted but now not a working place. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अंडरग्राउंड वर्किंग के संबंध में गोप का अर्थ है जहां से कोयला निकाला जा चुका है परंतु जो वर्किंग प्लेस नहीं है. द मिनिमम साइज ऑफ बैरियर इन बिटवीन टू पैनल्स इज ऑप्शन ए इक्वल टू द विड्थ ऑफ गैलरी साइज, ऑप्शन बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पैनल, ऑप्शन सी इक्वल टू पिलर साइज, ऑप्शन डी इक्वल टू फेस डायमेंशन. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. द मिनिमम साइज ऑफ बैरियर इन बिटवीन टू पैनल्स इज इक्वल टू पिलर साइज. Best production from HDL mining is expected from option A 3-level heading district, option B 4-level heading district, option C 5-level heading district, option D 6-level heading district. Right answer is option C. Best production from HDL mining is expected from 5-level heading district. The term representative factor is related with option A mine ventilation, option B mine plan, option C mine air sampling, option D mine drainage. Right answer is option B. The term representative factor is related with mine plan. The mining Sardar must have a valid first aid certificate of standard of option A Bachelor of Arts, option B St. John's Ambulance Association India, option C St. Martin's Ambulance Association India, option D Bachelor of Science. Right answer is option B. The mining Sardar must have a valid first aid certificate of standard of St. John Ambulance Association India. With Mining Gyan 2.0.